op-amp from filters, the first and second order filters that I intend to continue later on. And I'm quickly jumping over to the non-linear applications, and they are very easy part of the syllabus, but they're very important also. And I just want to finish this, just to make sure that there is sufficient material for the second test, and that we are able to cover the significant part of the syllabus. We are almost rushing because in this semester, as you would also agree, somehow the time given for completing such a huge syllabus was actually very less. And considering the fact that a lot number of the basic things which you were supposed to have before coming to this course, that was somehow not there. So I devoted a lot of time in the beginning to those basics. And there was the third problem of this semester, that we were handling the things in the pandemic situation, in the online situation. And all of you would agree that in the online situation, it has its own limitation. You know that covering syllabus uh, in some way, it might appear that is pretty faster, but faster for the things which are not of the analysis type, that you make a circuit, you write down the equations, and then derive and find out the final result. So for courses like microelectronics, we just cannot appreciate the online setup. So with this opening remark, let me quickly take you to today's class. Today's class is on the nonlinear applications of op-amp, the operational amplifier. Before I start doing it, am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. Do you see the screen properly? Is everything clear there? Yes, sir. Okay. So before I start, let me again request all of you to please spread the message to all those who have not joined yet, because I see only 44, 45 students. There are many more. This is basically the combined class of the two sections, section 1, section 2. I hope that we get at least 100 students, right? Although the lecture is being recorded, and the recording will be there and will be shared with all of you. But listening in the live situation makes sense, and also there is the attendance aspect. So please ask all of them to be here, right? Okay. So coming back to the today's topic, it is on the nonlinear applications. And as you can see in this slide, give me a moment.
Okay, I'm back. All right. So in this nonlinear applications, as you would recall that for the op amp that you see here, this op amp has the terminal relationship as can be seen that VO is A naught times V1 minus V2, right? And this you can write as VO A naught VD. VD is the differential input voltage, which is actually V1 minus V2. Now, this relationship is a linear relationship. That output is linearly varying with the input VD. Input is VD, output is V naught, and it is linearly varying. And A naught is the proportionality factor, which we call the open loop gain. Correct. Now, if you see on the left side, this relationship has been shown by a curve, and that curve is called the voltage transfer characteristic (VTC). This VTC is called voltage transfer characteristic. How the differential voltage is transferred to the output. So you can see two curves there. One black curve, one the green curve. Green curve is the curve for the op amp, which has A naught finite. If open loop gain is finite, then the green curve is followed by this equation, right? And therefore, you have the linear part visible QR. QR green one is the linear part, right? Now, if A naught, if we assume that op amp open loop gain is infinity, in that case, the voltage transfer characteristic takes a shape of step type, the black curve, right? So you can see PQRS part shown on both characteristic curves, the green curve and the black curve. And as can be seen here, that the QR part is the linear part of the voltage transfer characteristic, and the PQ part and RS part, they are the nonlinear part of the characteristic. So when op amp is going to be used in the linear part of characteristic, it should be operated in the QR region. अगर आप op amp को QR region में operate कर रहे हो, then you are ensuring that op amp is operating in linear region. On the other hand, if you operate op amp in this region, the PQ and RS region, then you are operating in the nonlinear. So when op amp when op amp is used in the nonlinear part, those applications will be called the nonlinear application of the op amp. आपने अब तक जो applications पढ़े थे पिछले semester में, they were all linear applications, right? There we assume that V naught is A naught VD, or A naught, if it is infinite, then we assume that the two inputs V1 and V2, they are virtually short, right? So whenever we consider virtual short, right, then it is linear application of the op amp, correct? And whenever the two inputs are not at the same potential, right, ध्यान देने की बात है that please note that if op amp is ideal and if the two inputs are at the same potential, that then you are probably operating it in this region because VD is 0. When VD is 0, then both terminals are at the same potential. On the other hand, if there is some difference between the two voltages V1 and V2, then obviously you are not operating in the QR region. Then you are operating, अगर एक इनपुट यहाँ है, एक इनपुट यहाँ पर है, तो नेचुरली दोनों इनपुट डिफरेंट है V1 और V2. या अगर दोनों इनपुट यहाँ पर हैं इस पार्ट में, तो भी दोनों डिफरेंट है. दोनों इनपुट यहाँ हैं तो भी डिफरेंट है. अगर दोनों इनपुट यहाँ पर हैं, then output will be how much? Consider this situation, first situation. If the V1 and V2, they are in this region, then what is the output? Then output is plus VCC. Correct? And if the two inputs are in this region, in this part of this, then output is how much? Output will be minus VCC. You understand that? Is that okay? Yes, sir.
करेक्ट। अब इसको इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं. लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड. In next slide, I have shown an application, the nonlinear application of the op amp, which is called the comparator. So there are two figures, figure A and figure B. Figure A has the same op amp shown here, right? So, and what is important that this op amp is ideal. Ideal means V1 and V2 अगर linear part of characteristic में है तो V1 will be equal to V2. But if V1 is not equal to V2, then what will be the output? Output will be either plus VCC or minus VCC. Is that okay? आप पिछली स्लाइड से देखो. Output will be either plus VCC or it will be minus VCC. Non-linear part is this only. Non-linear part of the characteristic, please note, this part is non-linear, this part is non-linear. और इन दोनों पार्ट में आउटपुट इज नॉट वेरिंग, आउटपुट इज कांस्टेंट. कैन यू नोट दैट? आउटपुट इज नॉट वेरिंग, आउटपुट इज कांस्टेंट. इधर इट इज प्लस वीसीसी और इट इज माइनस वीसीसी. प्लस वीसीसी कब है? व्हेन वीडी इज, ये जो now in this voltage transfer characteristic, in this voltage transfer characteristic, please focus on the black curve. Black curve corresponds to the ideal op amp. Is that okay? Yes, sir. Right. In this black characteristic curve, what you can note that when VD is positive, मैं इसको black से ही लिखूं तो कैसा रहेगा? Then probably that makes sense. When VD is positive, what is output? Plus VCC. Plus VCC. That's very good. Output is plus VCC. For entire positive range, output is here. Ideal op amp में. On the other hand, if VD is negative, and what is VD by the way? VD, as I have told you already, VD is nothing but V1 minus V2. And V1 is what? V1 is the non-inverting input voltage, V2 is inverting voltage. So if V1 minus V2, if V1 minus V2 is positive, then output saturates to plus VCC. Please note that if V1 minus V2 is positive, then output saturates to plus VCC. On the other hand, if V1 minus V2 is negative, then output saturates to Minus VCC. minus VCC. Is that fine? ये इतना अगर आपने नोट कर लिया, then the second slide on comparator, you know, this is what is shown graphically here. That in an ideal op amp, if VD is positive, then output is plus VCC. If VD is negative, then output is minus VCC. Is that fine? Is this figure A okay? Yes, sir. Right. Let us go to figure B. In figure B, as you can see, the inverting terminal, this the first one, figure B, one part. Here, the inverting terminal is grounded. और नॉन इन्वर्टिंग में हमने एक पॉजिटिव वोल्टेज दे दी. तो what will be VD now? VD will be positive. Is that right? Yes, sir. Then what will happen to VO? VO will saturate to Plus VCC. plus VCC. Correct. Now let us see the second part. The second part. Here, inverting terminal is grounded. Non-inverting is given negative voltage. So VD is how much?
Negative. Negative, so output will saturate to this Minus. is saturate to minus VCC. करेक्ट. थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में क्या किया हमने, हमने नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड कर दिया. अब व्हाट इज VD नाउ? Negative. VD is negative, so output will saturate to Minus. VCC. minus VCC. Correct. What happens to the fourth part? V naught will be plus VCC. This will be plus VCC. Perfect. अब आपकी समझ में आ गया कि नॉन लीनियर जो ऑप एम्प का मोड है वो किस तरह से ऑप एम्प. अब ये सारा सर्किट आगे समझना बहुत आसान हो जाएगा. लेट अस सी नाउ द another comparator circuit. Now what I'm doing in this first in this A part of the figure, इन्वर्टिंग को हमने ग्राउंड कर दिया और नॉन इन्वर्टिंग को हमने साइन वेव दे दिया. अब साइन वेव क्या होगी? विदाउट ऑफसेट ऑफ कोर्स. इस इक्वेशंस दिख रहा है, देयर इज नो डीसी ऑफसेट. इज दैट ओके? Yes, sir. Right, which means now this terminal voltage will be sometimes positive and it will be sometimes negative. So whenever the input is positive, output will saturate to plus VCC. Whenever input is negative, output will saturate to minus VCC, which is what is now shown here in this figure. Can you see that? This blue one is the non-inverting input, which is V1. करेक्ट. और जो इन्वर्टिंग पे है वो क्या है? इन्वर्टिंग पे वोल्टेज कितनी है? 0. 0 को हमने यहां पर एक रेड लाइन से बना दूं. अब आप देखो, अब आपको कंपेयर किससे करना है? आपको V1 माइनस V2 देखना है कि कहां पर पॉजिटिव है. जहां भी V1 माइनस V2 पॉजिटिव होगा वहां पर आउटपुट क्या होगा? अच्छा, प्लस VCC. प्लस VCC. Whenever V1 minus V2 is negative, output will be minus VCC. अब देखो, ये blue one is positive, so V1 minus V2 यहां पर पॉजिटिव है. देख रहे हो? This is positive. Compared to red line is 0, blue line is now positive. So in this part, VD is positive. Therefore, output is shown by black. Output is shown by the black. As you can see here, it is now saturated at plus VCC during this part. In this negative cycle of sine wave, V1 minus V2 is negative. V1 is blue, V2 is red, so V1 minus V2 is negative. Therefore, output saturates here in the negative side. Is that okay? Is that okay? Yes, sir. Yes, sir. So sine wave got converted into square wave. ये ध्यान रखने की बात है. This is ideal op amp when we are treating the open loop gain infinite, right? अगर हम ये इनपुट के टर्मिनल्स को स्वैप कर दें ऊपर वाले सर्किट के कंपैरिजन में और अब यहाँ इन्वर्टिंग पे साइन वेव दे दें, नॉन इन्वर्टिंग को हम ग्राउंड कर दें, then the same square wave would get inverted. Is that okay? Is that agreeable? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. So कंपैरेटर का एक ये भी आपने एप्लीकेशन देख लिया कि how a sine wave can be converted into square wave. Now the comparison level जो आपने ऊपर देखा है, the comparison level, this is what is the comparison level. This is the reference. Reference is 0 and this voltage is being compared. Whenever this voltage is positive compared to 0, output saturates to plus VCC. Whenever this voltage, the non-inverting terminal voltage, is negative compared to the reference, it becomes negative. Is that okay? Which is why the name comparator. It is Yes, sir. comparing.
इट इज ओनली कंपेयरिंग, अगर ये वोल्टेज इससे ज्यादा है तो प्लस वीसीसी। आई मीन इट्स लाइक अ बाइनरी सर्किट। इसका आउटपुट जो है, आउटपुट की दो स्टेट हैं, दो स्टेबल स्टेट हैं। स्टेबल स्टेट 1 विच इज प्लस वीसीसी, ये कब मिलेगी? ये कब मिलेगी कि व्हेन नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज इज मोर पॉजिटिव कंपेयर टू इन्वर्टिंग। दूसरी स्टेबल स्टेट क्या है? स्टेबल स्टेट 2, that is minus VCC. When non-inverting terminal is more negative compared to the inverting terminal, then it is minus VCC. It is comparator. अब कंपैरिजन का लेवल यहां पर हम जो रेफरेंस था, जो पहले 0 हमने रखा था ना, हमने रेफरेंस VR कर दिया। ठीक है, जो ऊपर रेड लाइन बनाई थी हमने, दिस रेड लाइन is now shifted here. It is now not at 0. Can you see that? जो पहले यहां पर रेड लाइन थी, ये हमने ऊपर शिफ्ट कर दी। Is that okay? Yes, sir. अब कंपैरिजन करो इस वोल्टेज का इस वोल्टेज से। नाउ द नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज इज कंपेयर्ड विद दिस। अब when the difference of these two is positive, it is positive only in this part. Only in this part the difference is positive. You can see that positive, 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 positive. और इधर ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। Sir, So whenever difference is positive, output is saturated to plus VCC. Whenever difference is negative, output is saturated to minus VCC. Is that okay? yes sir. Yes, sir. Sir, बोलो। on का time lapse कम हो जाएगा sir. इसके अंदर। Obviously. So this time T1 will be smaller than time T2. ऊपर क्या था? ऊपर T1 is equal to T2. इसमें देखो तो this is T1 and this is T2. So for ideal op amp, T1 happens to be equal to T2. और ड्यूटी साइकिल क्या होती है पता है आपको? No, sir. Duty cycle is called the T on divided by T on plus T off. So duty cycle will be how much? 0.5, because T on is double of T on plus T off. Is that okay? बोलो भाई। Sir, T on is equal to T off. Exactly. So T on is equal to T off, which means T on divided by T on plus T off will be 0.5. Yes sir. So ड्यूटी साइकिल को अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो ड्यूटी साइकिल विल बी 50%. Is that okay? Yes, sir. Duty cycle will be 50%. In the lower circuit, however, duty cycle Will be less than. will be less than 50%. Correct? Okay, let's now move over to the next slide. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्लाइड है, आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है, हमने इसमें क्या किया, ये जो ऑप एम्प है, इसमें एक्चुअली ऑप एम्प मिक्स हो गया ऊपर की ड्राइंग में, फिर से बना देता हूं यहां पर। So you have the non-inverting input and the inverting input and this output, assuming that it is ideal op amp. Inverting input पे हम एक इनपुट दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग पे एक दूसरा इनपुट दे रहे हैं। जो इनपुट हम इन्वर्टिंग पे दे रहे हैं वो एक साइन वेव है, जो कि थोड़ी लो फ्रीक्वेंसी की है, लेकिन उसमें ऑफसेट है। सर स्लाइड चेंज नहीं हुई। नहीं, मैं उसी स्लाइड पे बना रहा हूं ना। सर शो नहीं हो रहा, लैग हो रहा है काफी। नाउ कैन यू सी? नो सर।
You can't see anything. Can you see this slide now, a blank slide? No, sir. No, sir. No, sir. आपको आवाज आ रही है बस मेरी, है ना? Yes, sir. ओके, एक बार ये स्क्रीन शेयर दोबारा कर लीजिए। एक बार फिर से कर दूं। यस यस यस, ओके, लेट मी सी दैट। कैन यू सी दिस नाउ? अब ठीक है? Yes, sir. ओके, सो नाउ दिस इन्वर्टिंग जो टर्मिनल है, इस पर एक साइन वेव दी जा रही है जो कि उसमें ऑफसेट है, और साइन वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो है। ऐसे जो नॉन ये दिस इनपुट इज गिवन हियर, जो नॉन इन्वर्टिंग पे है वहां पे हम एक दूसरी वेव दे रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। लेट अस सी दैट फ्रीक्वेंसी 10 टाइम्स ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी। साइन वेव की 10 या 10 से ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, एंड दैट इज द सॉ टूथ वेव जो कि एक ही डायरेक्शन में है। फॉरवर्ड सॉ टूथ, ठीक है? अब this op amp is going to be working as a comparator. इन दोनों इनपुट से कंपेयर करेगा, द इनपुट V1 and input V2. V1 is the non-inverting, V2 is the inverting. और जब भी V1 is more than V2, output will be saturating to plus VCC. Whenever V1 is less than V2, output will be saturating to minus VCC. अब आप इस फिगर को अपने आप समझने की कोशिश करो। कैन यू सी द ग्रीन लाइन इज द इन्वर्टिंग इनपुट, ब्लू sawtooth wave is the non-inverting input, and the red one is the output. Is that okay? इस पार्ट में वेव फॉर्म के डिफरेंस इज पॉजिटिव, therefore it is saturating to plus VCC. इस पार्ट में however difference is negative, therefore it is saturating to minus सर ये VCC. तो नॉन यूनिफॉर्म होगा ना आउटपुट का ग्राफ? हाँ, ऑब्वियसली ये जो width है, this width will be different, यस right? So this is called pulse width modulation. Modulation, PWM. Is that okay? Yes, sir. ये जो सारी सर्किट मैंने बनाई हैं, इन सारी सर्किट को you should test on ये जो सर्किट बनाई है मैंने, प्लीज टेस्ट इट ऑन स्पाइस, और इसके रिजल्ट को अपनी लैब फाइल में लगाओ। इज दैट ओके? डॉट ट्रान करोगे तो ये वेव फॉर्म पल्स विथ मॉड्यूलेशन की बन जाएगी। 10 साइकिल देकर के टेस्ट कर सकते हो बड़े आराम से, यू विल सी द रिजल्ट। इसको हम लैब में हार्डवेयर पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ मूविंग फर्दर अहेड, this is now circuit of Schmitt trigger. Schmitt trigger is another non-linear application. अभी तक आपने कंपैरेटर पढ़ा, कंपैरेटर का एक स्पेशल यूज है Schmitt trigger, and Schmitt trigger is a name of another name of a circuit called bistable multivibrator. The output of this circuit, it vibrates between two states, two stable state. आपको पता है op amp has two stable states in nonlinear mode.
One is the plus VCC, other one is the minus VCC, right? So this, and both states are stable. जब तक कि इनपुट पे हम कंपैरिजन के स्टेट को चेंज ना करें. If suppose always the V1 minus V2 always remains positive. If this always remains positive, then VO, this will cause what? This will cause VO also to always remain what? Plus VCC. Plus VCC. So output will be in a stable state. If on the other hand, V1 minus V2 is always negative, then output will remain in the other stable state, which is the minus VCC. करेक्ट. तो ये दो स्टेबल स्टेट्स हैं, उसके बीच में इसको हम वाइब्रेट करा सकते हैं बाय केयरफुली चेंजिंग द इनपुट कंपैरिजन वोल्टेजेस और इनपुट डिफरेंशियल वोल्टेजेस. V1 माइनस V2 को हम केयरफुली या अपने डिजायर्ड मैनर से वेरी करा करके आउटपुट की स्टेट को हम वाइब्रेट करा सकते हैं. दोनों स्टेट में प्लस VCC माइनस VCC, प्लस VCC माइनस VCC, और दोनों स्टेबल स्टेट है. राइट. नाउ लुक एट दिस सर्किट. This circuit. In this circuit, what happens that there is this positive feedback now. Please note that ये inverting amplifier नहीं है, non-inverting amplifier भी नहीं है. You agree? Is that clear? Yes, sir. Inverting amplifier कैसे बनता है? अगर हम ये ऐसे कर दें, यहां पर ये कर दें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाने का तरीका ये होता है that we give input here. That's the inverting amplifier provided non-inverting input is grounded. Right? Is that okay? और यही नॉन इन्वर्टिंग कब बन जाता है? When I give input here and when I ground this. Is that fine? Inverting amplifier, and this is non-inverting amplifier. Is that fine? Yes, sir. जो आप यहाँ सर्किट देख रहे हो, इस सर्किट में इट इज नॉट नेगेटिव फीडबैक. इस सर्किट में दोनों नेगेटिव फीडबैक, यहां भी नेगेटिव फीडबैक है, दिस ऑल्सो नेगेटिव फीडबैक, and this is also negative feedback. Make no mistake. Negative feedback का दूसरा नाम क्या है? It is degenerative. मैंने शायद आपको बताया होगा शुरू में. Degenerative, which means अगर हम दोनों इनपुट को ग्राउंड कर दें and then if I try to find out the output will, what will happen? Because of negative feedback, output will eventually become zero quickly, right? दोनों ही केस में, isn't it? In this case, however, in this positive feedback, अगर हम दोनों को ग्राउंड कर दें, output will not be zero because this positive feedback is regenerative. Regenerative. आउटपुट की वोल्टेज, आप इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो कि जैसे आपने सप्लाई को ऑन किया, प्लस VCC माइनस बायस को ऑन किया, बायस को ऑन करते ही यहां पर मोमेंटरली कोई एक वोल्टेज आएगी आउटपुट पे, अंदर से, ऑप एम्प के अंदर से आएगी. ऑप एम्प की जो बहुत बड़ी सर्किट आपने देखी थी 24 ट्रांजिस्टर्स की, एक वोल्टेज यहां पर आएगी. that voltage at the time of switching this power supply, the bias, this output voltage will be either positive or it might be negative. You agree? कुछ छोटी सी वोल्टेज आएगी. If it is positive, वो पॉजिटिव वोल्टेज इन दोनों रेसिस्टर के थ्रू
यहां पर एक पॉजिटिव वोल्टेज डेवलप करेगी, और ये पॉजिटिव वोल्टेज अब देखो इस पॉजिटिव फीडबैक की वजह से पॉजिटिवली एम्पलीफाई करके इसको तुरंत पॉजिटिव साइड में ही सैचुरेट करा देगी प्लस वीसीसी पे। इनफाइनाइट गेन है ना, तो जो भी पॉजिटिव वोल्टेज यहां पर आप दे रहे हो इनपुट पे, दैट पॉजिटिव वोल्टेज विद इनफाइनाइट गेन makes output go to the maximum positive side. And what is maximum positive side? That is plus VCC. On the other hand, if at the instant of switching, if this output voltage is negative, तो अब यहां पर नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होगा, and negative voltage again magnified infinite times will force output to saturate at minus VCC, which is why it is called regenerative. जो भी आउटपुट का वोल्टेज है वो उसी डायरेक्शन में रीजनरेट होता है, and it forces output to saturate either to plus VCC or to minus VCC. Is that agreeable? Yes, sir. Is that okay? तो दोबारा एक्सप्लेन कर दिया वाला। अरे भाई निखिल, क्या कह रहे हो? दोबारा सुन लो। यही तो बात है, तुम लोग घर पर बैठे हो, पता नहीं छठ का प्रसाद खा रहे होगे, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है तुम लोगों के उस पर, घर की सेटिंग पर। एनीवे, ध्यान से सुनो, ठीक है। Whenever I am switching on this power supply under the condition that both inputs are grounded, जैसे हमने सप्लाई ऑन किया, what will happen? Momentarily ऑप एम्प के अंदर से यहां पर कुछ वोल्टेज आएगी आउटपुट पे। वो वोल्टेज इनिशियली या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, थोड़ी सी, पूरी नहीं कह रहा हूं, थोड़ी सी। लेट अस से 1 वोल्ट, 1 मिली वोल्ट, 10 मिली वोल्ट, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मुझे नहीं पता कितनी होगी। अगर ये वोल्टेज पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वोल्टेज इन दोनों रेसिस्टर से डिवाइड होकर यहां कुछ वोल्टेज बनेगी ना। अब ये वोल्टेज यहां आ रही है एज इनपुट। नाउ दिस पॉजिटिव वोल्टेज मल्टीप्लाइड इनफाइनाइट टाइम्स विल बी हाउ मच? विल बी इवन मोर पॉजिटिव, और वो मैक्सिमम पॉजिटिव क्या होगा? प्लस वीसीसी। ऑन द अदर हैंड, अगर ये इनिशियल वोल्टेज पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव होती तो नेगेटिव वोल्टेज अब यहां नेगेटिव डेवलप करेगी, और ये नेगेटिव वोल्टेज अब एम्पलीफाई होगी इनफाइनाइट टाइम्स, आउटपुट अब क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में सैचुरेट हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। इज दैट फाइन? Yes, sir. Good. Okay. So, which is what is now shown here in the diagram. जैसे हमने सप्लाई ऑन किया इसको ग्राउंड करके, और ये ग्राउंड ऑलरेडी है, सप्लाई ऑन करते ही या तो आउटपुट सैचुरेट होगा प्लस वीसीसी पे या आउटपुट सैचुरेट होगा माइनस वीसीसी पे। द टू पॉसिबल आउटपुट्स, और ये नहीं पता कहां सैचुरेट हो रहा है। दैट इज अनसर्टेन, that is uncertain. Please note that. इस सर्किट को बनाने के बाद अगर आप सप्लाई को ऑन करो तो आप ये नहीं कह सकते आउटपुट कहां पर है, प्लस वीसीसी पे है या माइनस वीसीसी पे है। लेकिन दोनों में से कोई एक होगा, या तो ये होगा पहला वाला ए, ईदर दिस और दिस। Is that fine? सर हाँ, सर अगर हमें आउटपुट कंट्रोल करना हो, अगर हमें से प्लस वीसीसी चाहिए हो तो उसके लिए क्या करेंगे? अभी आ रहे हैं उस पर बेटा, ठीक है। Now let us see this circuit. The same circuit, Schmitt trigger. अब इसको समझने की कोशिश करो। हमने क्या किया कि इसी सर्किट में अब ये आई एम ट्राइंग टू
that there is this input. यहां हम कुछ इनपुट देंगे, हमने इसको ग्राउंड नहीं किया है. आई एम गोइंग टू गिव इनपुट vi and then I want to find out what will be vo. vi और vo का हम कर्व प्लॉट करेंगे, vo वर्सेस vi. सो आपको अब ये समझना है कि व्हाट इज दिस कर्व. करेक्ट. ये समझने के लिए हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि vo जो है इस सर्किट को ऑन करने के समय में vo इज समवेयर ईदर एट प्लस वीसीसी और एट माइनस वीसीसी. हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा. बिना एज्यूम किए हम ये नहीं समझ पाएंगे. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस characteristic curve. Okay, let us assume that VO is saturated at plus VCC. इसको माइनस से भी आप कर सकते हो, लेकिन पहले प्लस से करके देख लो. ठीक है. अब ये VO प्लस VCC भी सैचुरेटेड है, तो इस R1 R2 के थ्रू डिवाइड होकर के यहां कितनी वोल्टेज आ रही है? VR. Is that okay? Yes, sir. R2 by R1 plus R2 को हमने लिख दिया ईटा. This I have now written as ईटा. तो अगर VO प्लस माइनस VCC है तो VR क्या होगा? प्लस माइनस ईटा VCC होगा. Is this equation agreeable? If VO is plus minus VCC, then VR will be plus minus ईटा VCC. Yes, sir. ठीक है. अब जो कंपैरिजन लेवल है इस पॉइंट का, वो इन्वर्टिंग वाले का, वो ये हो गया ईटा वीसीसी. ठीक है. अब यहां इनपुट पे हम एक कोई सिग्नल देंगे. ये जो सिग्नल है vi, this will always be compared with vr, right? Whenever vi is less than vr, output will be saturated to plus VCC. Is that okay? Whenever Vi is less than VR, output is saturated to plus VCC. Whenever Vi is more than VR, output is saturated to minus VCC. ठीक है ना. अब सपोज प्लस VCC पे है, तो कंपैरिजन लेवल VR कहां पर है? VR will be at point C. ये 0 है. This is 0. So this direction is positive. This direction is also positive. This direction is negative. And this direction is also negative. Output negative. Input negative. Output positive. Input positive. Is that okay? So whenever output is saturated to plus VCC, the comparison level is set to plus eta VCC. Correct? अब आपने इनपुट को बढ़ाना शुरू किया पॉजिटिव डायरेक्शन में. जब तक इनपुट की वोल्टेज इस पॉजिटिव वोल्टेज से, विच इज प्लस eta VCC से कम है, तब तक आउटपुट विल बी सैचुरेटेड टू प्लस VCC. तो ये जो पाथ है, जो रेड वाला एरो बना रहा हूं, ये फॉलो हो रहा है. आउटपुट इज सैचुरेटेड टू प्लस VCC. ये प्लस VCC लाइन है. और ठीक इस पॉइंट पे आकर के, बी पॉइंट पे आके आपको ऐसा लगता है कि नाउ इनपुट इज नाउ गोइंग बियॉन्ड प्लस VCC. तो आउटपुट गोज टू व्हाट? आउटपुट बिकम्स नाउ माइनस VCC. ठीक है. सो इट वेंट लाइक दिस. द रेड लाइन, कैन यू सी दैट? Yes, sir. अब इस जगह पर आउटपुट इज नाउ वेयर? आउटपुट इज नाउ माइनस VCC. अब कंपैरिजन लेवल कहां आ गया? जो कंपैरिजन लेवल है VR, वो कहां आ गया? इट इज नाउ हियर, F. अब F हो गया कंपैरिजन लेवल माइनस ईटा VCC. अब अगर हम इनपुट को घटाना शुरू करें, ये ग्रीन देखना, ग्रीन एरो घटाना शुरू करें, आप कंपैरिजन का रास्ता ये हो गया, इधर से आएगा. अब ये जैसे ही
input becomes more negative than minus eta VCC, it just jumps from this to this and it follows this green arrow path. It follows this green arrow path. तो आपको बहुत साफ दिख रहा है, forward path is this way and the negative path is this way. इसे बोलते हैं hysteresis loop of the Schmidt trigger. And these two voltages are called the triggering potentials. This one is called upper triggering potential, UTP. This one is called lower triggering potential, LTP. Whenever input is less than UTP, output is saturated to plus VCC. Whenever input is more negative than LTP, it is saturated to minus VCC. Sorry, whenever Sir, it will be plus VCC. yes, yes. तो अभी इसको लैंग्वेज की शक्ल आप दे सकते हो by seeing this hysteresis loop. Is that okay? That hysteresis loop जो हमने उस डायरेक्शन में बना रखा है कि ये इस तरफ से ऐसे आकर के ऐसे गया और फिर इस तरफ से ऐसे आकर के ऐसे गया, राइट? दिस एंड दिस, ठीक है? ये कब मिल रहा है? When we are giving input to the inverting terminal and the positive feedback R2 is grounded. अगर हम इसको उलट दें, if I now ground the inverting terminal and input यहां पर देना शुरू करें, तो hysteresis loop will have a different path. It will now be like this, going like this and coming like this. This, and this, and this. As can be seen in this diagram. अब जो yes. So what if sir अगर हम दोनों टर्मिनल से इनपुट प्रोवाइड करें? नहीं, दोनों से इनपुट टर्मिनल प्रोवाइड करने का कोई मतलब नहीं. It will be very confusing to find out the output. सर अगर हमारा दोनों तरफ से दोनों टर्मिनल पे सर अगर हमारा इनपुट इक्वल क्वांटिटी का हो सर, देन व्हाट? इक्वल, आप इक्वल का मतलब ये होता है कि आप इसको भी ग्राउंड कर दो, इसको भी ग्राउंड कर दो, तो आउटपुट विल बी ईदर सैचुरेटेड टू प्लस वीसीसी और सैचुरेटेड टू माइनस वीसीसी. मैंने शुरू में कह दिया था, शुरू में डिस्कस किया था ये तो. Yes. करेक्ट. सो दोनों को इक्वल नहीं देना और दोनों पे इनपुट देकर के टेस्ट नहीं करना. तो दिस Schmidt ट्रिगर इज कॉल्ड द नॉन इन्वर्टिंग Schmidt ट्रिगर, क्योंकि इनपुट जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये सैचुरेट कर रहा है. अब if input is increased in this direction, output saturated to the plus VCC. ऊपर वाले में आप देखो इसका उल्टा है. This one is the inverting Schmidt trigger. इनपुट पॉजिटिव में जा रहा है तो आउटपुट नेगेटिव में सैचुरेट कर रहा है. Here if it goes in negative direction, it saturates to the positive side. Correct? So this one is the inverting Schmidt trigger. This one is inverting Schmidt trigger, right? And this one is non-inverting Schmidt trigger, which is
clearly visible from this hysteresis loop. Is that okay? Yes, sir. Now, a quick revision. Op-amp, open loop, right? Whenever VD is positive, output saturates to plus VCC. Whenever VD is negative, VD positive saturates to plus VCC. VD negative saturates to minus VCC. Correct? Then there are two Schmitt triggers. Schmitt trigger को binary भी बोलते हैं. Binary or bistable multivibrator, because output has got only two states and therefore binary, 0 or 1, minus VCC or plus VCC. You can treat minus VCC as 0 and plus VCC as 1, right? Therefore binary. So this one is the inverting binary. This one is non-inverting binary. जो हमने अभी सर पढ़ा. नॉन इन्वर्टिंग में सर ईटा की वैल्यू R1 by R2 होगी. Yes, this is important. This is very, very important. Inverting में eta will be R1 by R1 plus R2. So UTP, LTP is decided by that only. UTP is eta VCC, LTP is minus eta VCC. यहाँ पर UTP will be eta VCC. Here LTP will be minus eta VCC. तो ये, after having discussed this, now let us make use of this binary. हमने यहाँ पर एक inverting binary use किया है, astable multivibrator. हम कैसे बनाते हैं? We make use of one inverting binary, और inverting binary का output हम इस RC सर्किट को दे देते हैं, ठीक है? और इसका यहाँ से हम ये आउटपुट इधर लगा देते हैं. इट्स अ काइंड ऑफ क्लोज लूप. करेक्ट? तो इस सर्किट को, ये जो सर्किट यहाँ बन रही है, दिस सर्किट दैट वी हैव, ये 2 पोर्ट नेटवर्क है. इस सर्किट का इनपुट क्या है? प्लस माइनस VCC है. आउटपुट क्या है? आउटपुट इज द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. दिस वोल्टेज इज द आउटपुट. तो वोल्टेज यहां कैसा होगा? विच इज शोन इन द बिलो डायग्राम. अगर इनपुट प्लस VCC है तो आउटपुट एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाएगा एंड इट विल फॉलो दिस पाथ. VCC 1 minus e raised to power minus t by RC. This we know already. Is there any problem? नो सर. और अगर इनपुट माइनस VCC है तो ये वाला होगा, C पार्ट, माइनस VCC 1 minus e raised to power minus t by RC. करेक्ट? अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आउटपुट इज प्लस VCC या माइनस VCC, और यहां पर जो इन्वर्टिंग बाइनरी है इसका जो कंपैरिजन लेवल है दैट विल बी प्लस माइनस ईटा VCC. अब ये चार्ज होना शुरू हुआ. जैसे ही चार्ज होते होते VCT की वैल्यू कितनी पहुंची? प्लस माइनस. अगर ये प्लस VCC है और जैसे ही ये प्लस ईटा VCC पहुंचा, व्हाट विल हैपन? अब ये बाइनरी अपना स्टेट बदल देगा. दिस वाज अर्लियर प्लस VCC, नाउ इट विल गो टू माइनस VCC. अब ये फिर से उल्टा इसका चार्जिंग होनी शुरू हो जाएगी इस डायरेक्शन में, और जैसे ही इसकी वोल्टेज पहुंचेगी माइनस ईटा VCC, फिर से ये चेंज होकर के प्लस VCC हो जाएगा, which can be seen from this D diagram. When output is plus VCC, capacitor is charging in the positive direction, OP curve. As soon as the capacitor voltage reaches plus eta VCC level, output shifts from plus VCC to minus VCC. And now capacitor starts charging in this direction. As soon as it reaches minus eta VCC, it goes from this to this direction, to plus VCC. And the same thing repeats. Is that okay?
Is that fine? Yes, sir. So now this output of this multivariator VO is not stable. Both states, whether this state or this state, both states are quasi-stable. Quasi-stable. हाइफन लगा के लिखते हैं quasi-stable. You can write this as QS1 and this as QS2. Quasi-stable state 1, quasi-stable, quasi means semi-stable. थोड़ी देर के लिए VCC रहता है और फिर जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज कंपैरिजन में वो होती है, it just shifts to the other direction. Is that fine? अब ये ऑटोमेटिकली यहां पर अगर आप इस जगह की वोल्टेज वेवफॉर्म अब वेवफॉर्म अगर आप बनाओ तो इस जगह पर वेवफॉर्म क्या होगी? इस जगह पर वेवफॉर्म होगी प्लस VCC माइनस VCC, प्लस VCC माइनस VCC. इस जगह की वेवफॉर्म बनाओ तो वेवफॉर्म कैसी होगी? It will be exponential, plus eta VCC minus eta VCC, plus eta VCC minus eta VCC. Is that agreeable? Here you have plus minus eta VCC. Here you have plus VCC and minus VCC. Right? अब अगर आपसे कहा जाए कि find out T1 and T2 so that you can find out T and you can find out frequency of this square wave. By the way, the frequency of this signal and that of this signal both will be same, as can be seen from this diagram, D diagram. Now let us calculate T1 and T2. For calculating T1 and T2, we follow this relationship which I taught you in last semester. In a single time constant circuit, the capacitor voltage VCT can be written as V final minus V initial e raised power minus t by tau. Right? अब आप किसी एक पार्ट को फोकस करो और उस पे ये इक्वेशन 1 लगा करके T1 T2 निकालने की कोशिश करो. So if I want to okay, let us now target this PB part, P and B part of the exponential wave. Correct? ये जो wave दिख रही है exponential wave. This will give you what? This will give you T2. इससे आप T2 निकालोगे. इसमें कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज क्या है? इनिशियल वोल्टेज इज प्लस eta VCC. Yes. Yes. और इस पार्ट की जो फाइनल वोल्टेज होगी वो क्या हो सकती है? फाइनल वोल्टेज हो सकती है माइनस VCC. So this is initial, this one is final. और इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप ऐसे ही T1 के लिए क्या किया जाएगा? T1 के लिए if you focus on BF part of characteristic. So initial is eta VCC and final अगर नहीं रोका जाए बीच में तो it can happen plus VCC. तो अभी हम इस BF पार्ट को ध्यान रखते हुए ये जो डेरिवेशन है देखते हैं. BF के पार्ट, फॉर BF के पार्ट final is plus VCC, initial is minus eta VCC
करेक्ट. So equation 1 में लगा दो, VCT will be V final minus V किसी का initial. माइक खुला है, क्या आप म्यूट कर सकते हैं? Gaurav. Okay, is that fine? Yes, sir. Okay. So now if you see, if I substitute those final and initial here, I get this equation. So at any time t, the capacitor voltage at any time t, capacitor voltage is given by this. अब हम क्या करेंगे कि I want to find out at t equal to t1, and t equal to t1 के लिए हम क्या करेंगे? We will assume that this time is, let us say, 0 time, और उसके बाद what will be this time? This time will be t1, correct? So with that, at t equal to t1, what will be VCT? VCT will be plus eta VCC, and then t you can write as t1. So when you substitute all those things, you can then find out this relationship. इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुंच गई, ये दिख रहा है. कैन यू सी दैट? VCC पहले कॉमन लेके हटा दो, तो देन यू हैव eta इक्वल टू 1 minus 1 plus n 1 plus eta e minus t by RC. अब इस स्मॉल t को हमें दिखना है t1. As soon as you write t1, then this can become this equation, and from this you can then find out t1 as this. दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लो. So you will get t1 equal to RC. Is this equation okay? RC natural log 1 plus eta by 1 minus eta. ठीक है? Yes, sir. Right. Similarly, you can find out for T2. Similar way, you can find out again. T2 is RC natural log 1 plus eta by 1 minus eta. And T1 plus T2 will be twice RC natural log 1 plus eta minus 1 minus eta. So this is the time period T. You can find out the frequency of the square wave 1 by T. तो अगर आपको RC की वैल्यू पता है, अगर आपको ईटा की वैल्यू पता है, ईटा फॉर दिस सर्किट, हाउ विल यू फाइंड आउट? ये इस बाइनरी से आपको ईटा निकलेगा. इन्वर्टिंग बाइनरी is this one, A1, and eta is R1 by R1 plus R2. Okay, तो अगर ईटा पता है, अगर आपको RC पता है, you can then quickly find out what will be the frequency, right? अब ये जो इन्वर्टिंग बाइनरी है, इन्वर्टिंग बाइनरी को हमने, दिस इज द इन्वर्टिंग बाइनरी, इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर और इन्वर्टिंग बाइनरी, और इसमें ये लगा दिया, और इसके बाद सर्किट एक्चुअली ये बन जाती है. आपको बुक में इस तरह से डिटेल हमने जो ऊपर बनाया है वो ये है, इसकी एनालिसिस की हमने. इसको एक्चुअली हम इस तरह से बना सकते हैं, बिकॉज आई ट्रांसलेट दिस इनटू द ऑप-एम्प सर्किट ऑफ इन्वर्टिंग श्मिट ट्रिगर. और इसी सर्किट को, ये जो इतनी ऐसे सिस्टम समझाया गया आपको यहाँ पर, इसको एक्चुअली अगर आप रीड्रॉ करें तो इट लुक्स लाइक नथिंग बट दिस वन, where this part is inverting binary, and
This is the RC circuit. So this circuit is the astable multivibrator जो हमने अभी एनालाइज किया. Multivibrator. Is that okay? Yes, sir. ठीक है. ओके, नाउ कुल 3 तरह के मल्टीवाइब्रेटर्स होते हैं, बाइस्टेबल, मोनोस्टेबल एंड अस्टेबल. बाइस्टेबल में क्या होता है? देयर इज वन इनपुट और मे बी 2 इनपुट्स एंड देयर इज वन आउटपुट और मे बी 2 आउटपुट्स. Then what happens? Output remains in one stable state until one trigger arrive. जैसे ही एक ट्रिगर आती है, उस ट्रिगर के आते ही ये एक स्टेबल स्टेट से SS1 से SS2 में चला जाता है. और जब तक दूसरी ट्रिगर नहीं आती है इनपुट पे, तब तक वो SS2 में रहता है और दूसरी ट्रिगर आते ही फिर SS2 से SS1 में आ जाता है. So the trigger at the input causes transition of the output from SS1 to SS2. आउटपुट की 2 स्टेबल स्टेट्स हैं, SS1 एंड SS2. मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में क्या होता है? इट हैज वन क्वासी स्टेबल स्टेट एंड वन स्टेबल स्टेट. ये हमेशा क्या होता है? ट्रिगर के यस सर, बाइस्टेबल स्टेट का सर एप्लीकेशन क्या होगा? बाइस्टेबल इज नथिंग बट फ्लिप फ्लॉप जो आप डिजिटल सर्किट में पढ़ते हो, वो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है. ओके सर. ठीक है. मोनोस्टेबल में क्या होगा? जैसे ही ट्रिगर इनपुट पे आएगी, तो जो मोनोस्टेबल है इसकी 2 स्टेट होती हैं. एक स्टेट होती है क्वासी स्टेबल, एक होती है स्टेबल. तो ये एक्चुअली ट्रिगर के आते ही पहले क्वासी स्टेबल स्टेट में जाता है, वहां कुछ टाइम तक रहता है. दैट टाइम इज डिसाइडेड बाय दिस सर्किट कि वहां कब तक रहेगा. उसके बाद ऑटोमेटिकली इट कम्स बैक टू स्टेबल स्टेट और फिर से ट्रिगर का वेट करता है. जैसे ही फिर से ट्रिगर आती है, फिर से क्वासी स्टेबल स्टेट जाता है एंड देन अगेन इट कम्स बैक टू स्टेबल स्टेट. इज दैट ओके? Yes, sir. So that is the difference between bistable and monostable. अस्टेबल में क्या होता है? अस्टेबल में दोनों स्टेट क्वासी स्टेबल होती हैं और ये अपने आप दोनों स्टेट के बीच में ट्रांजिशन करता रहता है, कभी यहाँ पर और कभी यहाँ पर. और ये दोनों ही स्टेट अस्टेबल की सर्किट से डिसाइड होता है. आपने अभी जो सर्किट पढ़ी देखी, दैट वाज अस्टेबल स्टेट एंड T1 एंड T2 बोथ वर डिसाइडेड बाय द सर्किट इटसेल्फ. यहां पर ट्रिगर का बहुत बड़ा रोल है. ट्रिगर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बाइस्टेबल एंड मोनोस्टेबल. आई होप यू कैन सी दैट. Yes, sir. मोनोस्टेबल बाइस्टेबल में triggering is causing the transition from quasi stable to stable state or from one stable state to other stable state. Astable multivibrator has no input. Can you see the circuit? यहां पर कोई इनपुट नहीं है. Free running. Astable is called free running. Free running oscillator or free running multivibrator. Is that okay? Yes, sir. जो श्मिट ट्रिगर था वो बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था. आपने ऊपर जो पढ़ा वो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर था. नाउ लेट अस सी व्हाट इज ए मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. करेक्ट. ये जो ऊपर सर्किट आप देख रहे हो, इसमें अगर हम इस डायोड को निकाल दें तो ये कौन सी सर्किट है? If I remove diode, what it is? Bistable. Astable multivibrator, not bistable. अभी आपने जो पढ़ा, मैं इस ऊपर वाली सर्किट की बात कर रहा हूं. डोंट थिंक ऑफ दिस. नीचे की सर्किट का भी बात मत कीजिए. दिस पार्ट जस्ट फॉरगेट.
इस ऊपर वाले सर्किट में, इस वाले सर्किट में, इफ आई रिमूव डायोड, देन व्हाट इट इज? अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. डोंट यू सी? अभी तो पढ़ा हमने ये, कैसे इतनी जल्दी भूल गए? Yes, yes, sir. ये सर्किट, इसको हमने उलट के बना दिया है. देखो, Yes, sir. ये इन्वर्टिंग बाइनरी हो गया और ये हो गया आरसी सर्किट, राइट? सो दिस वन is nothing but the astable multivibrator. राइट? अब इसी अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में अगर आप ये डायोड लगा दो ग्रीन वाला, तो ये क्या होगा? अब आई वांट टू आस्क यू, इफ आई कनेक्ट डायोड नाउ, अब ये इस पार्ट को अभी भी इसको मत कंसीडर करो. डोंट कंसीडर दिस नाउ. Only consider that I am connecting diode. Now what will happen to output? As soon as I connect diode, what happens to output now? Will it remain free running now? डायोड नहीं है तब तो ये फ्री रनिंग है. ये डायोड आप हटा दो तो ये अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है. यहां पे स्क्वायर वेव बनने लगेगी, T1 equal to T2. But as soon as I connect diode, will it remain free running? Answer is no. मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं क्या होता है, कैसे होगा इसमें, राइट? ध्यान से सुनो. Once you understand this, your problem is solved. Now suppose I connect diode, and when I switch on the power supply, output somehow saturates to minus VCC. मान लो आउटपुट माइनस VCC पे आ गया इनिशियली. माइनस VCC पे आते ही अब ये जो R2 और R1 हैं, इनके थ्रू यहां पर पोटेंशियल डिवाइडर से कितनी वोल्टेज आ जाएगी? माइनस ईटा VCC. इज दैट ओके? इज दैट ओके? Yes, sir. और अब ये जो कैपेसिटर है इस R के थ्रू चार्ज होना शुरू हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में. और जैसे यहाँ की नेगेटिव वोल्टेज बढ़ती जाएगी, ये डायोड D क्या होगा? रिवर्स बायस में रहेगा ना रिवर्स बायस में. Yes, sir. And as soon as the capacitor voltage VCT reaches what? As soon as it reaches minus eta VCC, वैसे ही ये बाइनरी काम करेगा और आउटपुट विल नाउ स्विच फ्रॉम माइनस VCC टू प्लस VCC. इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. अब प्लस VCC होते ही क्या होगा? अब ये कंपैरिजन लेवल हो गया प्लस ईटा VCC. ठीक है? अब ये कैपेसिटर, अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चार्ज होना शुरू हुआ. चार्ज होते होते जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज इस डायोड के V गामा के बराबर हो गई, डायोड ऑन हो जाएगा और यहां की वोल्टेज 0.7 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी. कैपेसिटर वोल्टेज विल नाउ नॉट इंक्रीज बियॉन्ड 0.7. यू एग्री विद दैट? बिकॉज डायोड Yes, sir. जैसे ही कैपेसिटर की वोल्टेज बढ़नी शुरू हुई, ये पॉजिटिव वोल्टेज ये बढ़ते बढ़ते जैसे ही इसके 0.7 के आसपास हुई, डायोड ऑन हो गया. डायोड के ऑन होते ही अब यहां की वोल्टेज 0.7 से ज्यादा नहीं होगी. डायोड कैरेक्टरिस्टिक देखो, ये 0.7 के बाद वोल्टेज बढ़ता ही नहीं है. बढ़ता है क्या? ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है. सो यहां की वोल्टेज 0.7 हो गई. अब नाउ इफ दिस ईटा प्लस ईटा VCC, ध्यान देने की बात है, प्लस ईटा VCC, if it is greater than
0.7, तो यहाँ की डिफरेंशियल वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव and therefore output remains plus VCC. ठीक है ना? इसका मतलब ये जो बाइनरी है इसका आउटपुट ऑन करने के बाद इट विल सैचुरेट टू प्लस VCC इवन इफ इनिशियली इट वाज माइनस VCC. इनिशियली किसी वजह से अगर ये माइनस VCC पे था तो भी थोड़ी देर में ये क्विकली प्लस VCC पे सैचुरेट. तो प्लस VCC इज द स्टेबल स्टेट, is the stable state of this binary. अगर हम ये नीचे वाली सर्किट ना लगाएं तो ये जो ऊपर की सर्किट है, because of this diode and because of this design constraint that eta VCC is greater than 0.7 volt, अगर हम ये ensure कर दें कि eta VCC is more than 0.7, then this binary will always remain in its stable state, and which is plus VCC. Is that okay? Is that fine? Yes, sir. So the stable state of this circuit is, this one is the stable state plus VCC. Interestingly, अगर हम डायोड की पोलैरिटी रिवर्स कर दें, अब क्या होगा स्टेबल स्टेट? अब स्टेबल स्टेट विल बी माइनस VCC. Is that right? तो स्टेबल स्टेट को तय करना ये आपके ऊपर है, whether you want to keep stable state plus VCC or minus VCC. Right now, because of this diode connection as shown here, stable state is plus VCC. Okay? अब नीचे की सर्किट पे बात करते हैं. What is this circuit? What is this circuit doing? This circuit is actually creating trigger pulse. इस ट्रिगर पल्स समझने के लिए जो नीचे का जो सर्किट है, ये जो वेव फॉर्म है ये समझना पड़ेगा. So this one is the input given here, square wave. और ये जो CR circuit है, this CR circuit, this is actually differentiator circuit. And what it does, इस स्क्वायर वेव को ये इस तरह की स्पाइक में कन्वर्ट कर देता है. दिस आई डिस्कस्ड इन योर क्लास इफ यू रिमेंबर. स्पाइक्स बनती हैं, इस एज पे पॉजिटिव स्पाइक और इस एज पे नेगेटिव स्पाइक. फिर इस डायोड से क्या होता है, रेक्टिफिकेशन हो जाता है. पॉजिटिव वाली रुक जाती हैं और नेगेटिव वाली, सो यहां पर आपको ये नेगेटिव स्पाइक मिल रही है. नाउ एट दिस पॉइंट यू आर गेटिंग दिस स्पाइक, नेगेटिव स्पाइक. अब ये नेगेटिव स्पाइक हम क्या करते हैं, नेगेटिव स्पाइक हमने यहां लगा दिया, इस पॉइंट पे कनेक्शन कर दिया. डायोड का ये पॉइंट हमने यहां लाके जोड़ दिया. होगा क्या, जैसे ही ये नेगेटिव स्पाइक आएगी उस मोमेंट पे पहली बात क्या, ये जो बाइनरी है अपने स्टेबल स्टेट में, स्टेबल स्टेट इज व्हाट, इज प्लस VCC, एंड दैट मींस दिस पॉइंट इज ऑलवेज एट इट्स स्टेबल state which is plus eta VCC, and this point is always at 0.7, and because plus eta VCC is greater than 0.7, therefore output remains plus VCC. लेकिन ऐसी स्टेबल स्टेट में ऑल ऑफ सडन आप इस पॉइंट पे क्या दे रहे हो, इसकी वोल्टेज जो एक्चुअली प्लस ईटा VCC, आपने इसको नेगेटिव कर दिया. सो एट दिस इंस्टेंट यू आर मेकिंग इट गो नेगेटिव. यहां पर क्या था, प्लस ईटा VCC था,
मोमेंटरीली आपने जैसे इस पॉइंट की वोल्टेज को नेगेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू 0.7, अब ये जो बाइनरी है इसका स्टेट प्लस वीसीसी से माइनस वीसीसी हो गया। तो ये देखो इस पॉइंट पे ये प्लस वीसीसी से माइनस वीसीसी पे आ गया, और ये कब तक रहेगा? अब क्या होगा? अब माइनस वीसीसी आते ही अभी कैपेसिटर चार्ज होगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ये चार्ज हो रहा है, और जैसे ही चार्ज होकर के ये यहां पहुंचेगा माइनस वीसीसी, इट गोज फ्रॉम माइनस वीसीसी टू प्लस वीसीसी। So this state is quasi-stable, this state is stable state. And this changeover is happening because of this trigger pulse. Is that okay? Yes, sir. Sir, हाँ, so can we bind up like it's so we continuously take like 1-1.5 घंटे से हम नहीं पढ़ रहे, थोड़ा सा और हेडेक भी वो टाइप हो गया, आज फेस्टिवल ही बहुत हो गए घर पे है, तो कैन वी बाइंड अप हियर सर? well I understand अभिनव, फेस्टिवल में तो और आदमी का मन रिलैक्स हो जाता है। मैं भी I can give you a break for about 10 minutes and we can reassemble. पार्डन मी सर, बट आज फेस्टिवल है बहुत हो गए घर पे, तो आज शाम तक फेस्टिवल अभिनव बच्चों की सी बातें मत करो बेटा, डोंट टॉक लाइक दैट। है सर। मुझे पता है छठ क्या होता है। हाँ सर। छठ खत्म हो गया सुबह, आज सब फास्ट खत्म हो गया। सर आज शाम का है, कल सुबह होगा। नहीं, आज शाम का नहीं, आज सुबह का था शायद। आज शाम का है सर, पार्डन मी सर आज शाम का है। यस ओ, सर, शाम का है। आज शाम का है। ओके ओके, चलो फिर Yes, मैं अभी sir. बंद करता हूँ फिर, ठीक है? मुझे नहीं पता था। नो ओके सर, हैप्पी छठ सर। ओके चलो ठीक है, आई एम स्टॉपिंग नाउ। अटेंडेंस नहीं है। अटेंडेंस आप लोग मार्क कर दो। जी सर।